चलिए नमस्कार वंस अगेन, फिर से एक बार शुरू करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि एस्ट्रोलॉजी की जहां तक बात होती है, इट इज ऑलवेज सेड कि ये बहुत टफ साइंस है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज नॉट अ टफ साइंस। देयर इज ऑलवेज वे टू डू द थिंग्स इन अ वेरी सिंपल वे। तो आज हम उसी तरीके से करने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पूछूं कि आपको क्या 12 राशियां याद है इस क्रोनोलॉजिकल सीरीज के अंदर? डू यू रिमेम्बर? आप लोगों को 12 राशियां क्रोनोलॉजी के अंदर याद है? 12 राशियां का क्रम याद है? नो प्रॉब्लम, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। तो अब मैं जो आपसे बातचीत करूंगा उसके अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होंगे बेसिकली। कैरेक्टर्स से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी यहाँ पर आप अक्सर हम जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं राशियां है, ये प्लेनेट इस राशि के अंदर घूम रहा है। आप टेक्निकली इस बात को बोलेंगे कैसे, ये प्लेनेट इस राशि के अंदर घूम रहा है, इसका मतलब क्या बोलते हैं टेक्निकली? इसको बोलते हैं गोचर, या इसको प्रैक्टिकली बोलते हैं ट्रांजिट। ठीक है, ट्रांजिट बोला जाता है। अब जब मैं आपसे बात करूंगा राशियों की, प्लैनेट्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या आती है? यहाँ पर एक मेजर पॉइंट रहता है लर्निंग का, कि हम इनको याद कैसे रखें। दैट इज अ बेसिक चैलेंज एवरीवन फेसेस। ठीक है, तो आज मैं आपका वही प्रॉब्लम पहले सबसे पहले सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। तो हम लोग जो है बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ पर अब जो अपनी बातचीत को शुरू करूंगा वहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बेसिकली एक सोलर सिस्टम है, आप इसको स्टोरी की तरह समझिएगा। ठीक है। एक सोलर सिस्टम है जहाँ पर 9 ग्रह होते हैं। ठीक है। उन 9 ग्रहों के अंदर जैसे एक हमारा एग्जैक्टली परिवार होता है, हमारी फैमिली होती है, एक मम्मी पापा होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे लड़कियां होते हैं, कुछ लड़के होते हैं। ठीक है। इस परिवार में कुछ ट्रांसजेंडर्स भी हैं। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड, और एक एक चीज को हम बड़े ध्यान से समझेंगे। और मैं आपको ये जो सारी बातचीत बताऊंगा, बिकॉज सिंस चाहे मेरी खुद की प्रैक्टिकल क्लासेस हो, चाहे कोर्सेज हो, चाहे मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ, तो उनके अंदर कभी मतलब आई जस्ट नेवर ओपन एनी बुक। सो दैट इज द प्री इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। किताबें खोल के एक्चुअली अगर आपको मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आप जो है चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल स्टोरी के थ्रू सारी बातचीत करूंगा। ठीक है जी। तो मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आपको एक पीपीटी शो कर देता हूँ साथ साथ ही, ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट दीजिए मुझे। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ आप सुनते रहिए, साथ साथ मैं पीपीटी मीनवाइल शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर तकरीबन 9 लोग हैं ये सारे। ठीक है ना। अब इन 9 लोगों की बात करते हैं तो इनमें कुछ राशियां, एक एक कहते हैं राशियां क्या होती है? बेसिकली क्षेत्र होता है, इट्स काइंड ऑफ रीजन, REGION, लिख लो अभी अभी। बेसिकली अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया एक छोटी सी फैमिली है, इस फैमिली के अंदर कुछ लोग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे 3 जो है सिस्टर्स हैं। ठीक है, 3 सिस्टर्स हैं। उनके पहले नाम नोट करते हैं, उनको समझते हैं वो 3 सिस्टर्स कौन है। तो उससे क्या होगा, बेसिकली आप एंड में ये पाओगे कि ये जो तीनों सिस्टर्स हैं, जब आप इनको जान जाओगे तो आपकी जो 12 राशियां हैं वो आपको याद हो जाएंगी। इस वर्कशॉप की सबसे अच्छी चीज यही होगी कि आपको तो घर पे जाकर कोई बुक खोल के अपने नोट्स दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे। जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको सब याद होगा। दैट विल बी द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोट करते हैं पहली सिस्टर का नाम क्या था। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहली जो सिस्टर थी उसका नाम था मेवरी मिक। नोट कर लीजिए, ME। ये मेरा आपके सामने स्पेलिंग दिख रही है, देखते जाइए साथ साथ। MEVRIMIK, मेवरी मिक, ये पहली सिस्टर का नाम है। ठीक है ना। जैसे रमन जी बैठे हैं, रमन, RMAN, रमन नाम है। एग्जैक्टली उसी तरह से एक नाम है मेवरी मिक। नोट कर लीजिए, ये पहली सिस्टर है। ठीक है। मैंने सिस्टर्स इसलिए बोला क्योंकि मैं राशियों की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ब्रदर्स की बात भी करूंगा। अब इसमें भाई भी हैं 4। ठीक है, वो भी बताऊंगा, मगर पहले 3 सिस्टर्स से आपका परिचय करवा दूं। तो पहली सिस्टर का नाम है मेवरी मिक। ठीक है। दूसरी सिस्टर का नाम नोट कर लो अब। उस, उसका नाम है सिक्तुव्र, SIKTUVR, सिक्तुव्र। ठीक है, नोट कीजिए। दूसरी जो सिस्टर है उसका नाम है सिक्तुव्र। सिंपल सा है, सिक्तुव्र, मेवरिमिक, सिक्तुव्र। और तीसरी सिस्टर जो है उसका नाम है धमकुमी। ये स्पेलिंग्स जो आपको यहाँ से दिख जाएंगे, ये देखते जाइए मेरी स्क्रीन के ऊपर। DHAMKUMI, धमकुमी। आप कहोगे सर काफी अजीब से नाम है। भाई नाम तो नाम है, मैं नाम को अजीब सा तो नहीं कह सकता, बट ये है ठीक है, कई बार कुछ नाम प्रोनाउंस करने में दिक्कत है। मेरा नाम आप जब देखोगे तो भव्यदीप, तो अब देखा जाए तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट कोई बात नहीं। आदमी अच्छा हूँ, काम आऊंगा आप लोगों के। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए,
मेवरीमिक पहली सिस्टर है, दूसरी सिस्टर का नाम है सिक्तूव्र, तीसरी सिस्टर का नाम है धमकू। क्लियर? यहाँ तक की बात याद रखिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको, ठीक है, चलिए मैं अब आगे बढ़ने जा रहा हूँ। अब देखिए मैं इस सिस्टर का नाम जो है डिकोड कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। तो मेवरीमिक को मैं पहले सबसे पहले डिकोड करने जा रहा हूँ। मैं मे के आगे लिख दूंगा मेष, देखो आप, व्री के आगे लिख दूंगा वृषभ, मी के आगे लिख दूंगा मिथुन, क के आगे लिख दूंगा कर्क। तो मेवरीमिक के से मेरे को 4 राशियां मिल गई हैं। पहली 4 राशियां मुझे मेरी मिल गई, मेष मिल गई, वृषभ मिल गई, मिथुन मिल गया, कर्क मिल गया। तो ये मेरा मेवरीमिक नाम जो था वो डिकोड हो गया। मेवरीमिक सिस्टर को मैं सारी जिंदगी मिलूंगा, सबसे बड़ी बहन यही है तीनों बहनों में, ठीक है। तो इससे इसलिए हमने इसकी बात करी। अब दूसरी सिस्टर की बात करता हूँ मैं। दूसरी सिस्टर का नाम है सिक्तूव्र, मैंने आपको बताया था। तो सी से बनता है सिंह, क से बनता है कन्या, तू से बनता है तुला, और व्री से बनता है वृश्चिक। ठीक है, आई विल कम टू द इंग्लिश ऑल्सो। अभी मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस दीज थिंग्स इन इंग्लिश ऑल्सो, सो नथिंग टू वरी। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद द हिंदी और इंग्लिश? हिंदी, हिंदी, हाउ मेनी आर देयर हिंदी? जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, हिंदी, ओके। एनीवन एल्स? जस्ट रेज योर हैंड ऑन योर कैमरा, Sure. रेज योर हैंड। Hindi, English. हिंदी इंग्लिश बोथ, ओके, दैट्स Okay. ग्रेट। बाकी लोग बात नहीं कर रहे हैं, बात कीजिए प्लीज। एनीवेज, Yeah, आगे बढ़ते हैं। I can understand, not that much proficient. No problem, sir. I'm going to help you in English also down the line. No issues. So here I'm talking about the 3 sisters. Name of the first sister is Mevrimic, name of the second sister is Siktugra, and name of the third sister is Damkomi, right? So I'm decoding these names now. Right now this is in Hindi. When you will see my next slide, it is going to be in English also. Don't worry. So सिक्तुव्र, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। तो यहाँ तक हमारे को जो है 4 बहनें और मिल गई, 4 जो है राशियां और मिल गई हैं, ठीक है जी। तो क्या हुआ, सिक्तुव्र से मेरे को 4 राशियां, आई गॉट 4 मोर राशिस विद मी, विद बाय डिकोडिंग, जस्ट बाय ब्रेकिंग सिक्तुव्र। ओके, नाउ आई विल गो टू द थर्ड सिस्टर, द यंगेस्ट वन, वेयर आई विल सी धमकुमी। तो ध से बना धनु, म से बना मकर, कु से बना कुंभ, एंड मी से बना मीन। So Dhamkumi. So I got now 12 Rashis with me, and the best way to remember these Rashis that you always remember the name of these 3 sisters. अब मेवरीमिक आपको कभी नहीं बोलेगा, मेवरीमिक, सिक्तुव्र और धमकुमी याद रख लो। 12 राशियां सारी जिंदगी क्रम में याद रहेंगी, नथिंग टू वरी, इट्स a chronological series of these names. Okay, so this is the way we are going to learn the things. Actually, since I told you, I had been practicing almost now 21, 22 years old, but when I'm learning astrology when I was in the age of just 16 years. Okay. And my father is by the grace of God, he's my guru. And he, down the line, he's a doctorate in this field, and he, guided me. And I learned everything from him only. And though I am a qualified astrologer from Indian Council of Astrological Sciences, Chennai. आपको बता था देयर आर 3 सिस्टर्स, हमने समझे, ठीक है। तो हमारे को अब मेवरीमिक, सिक्तुव्र और धमकुमी याद रहेगा। नाउ आई एम गोइंग टू द इंग्लिश, हाउ टू प्रोनाउंस देम इन द इंग्लिश, यू कैन सी हियर, and don't worry, I'll share these ppts with you only. These are just for your references. We have made it quite easy. Okay, so we will share it with you. You will always have this material with you. So this is the way you have to learn. Now Mesh is equal to Aries, Rishabh is equal to Taurus, Mithun is equal to Gemini, Kark is equal to Cancer, Singh is equal to Leo, Kanya, Virgo, Tula, Libra, Vrishchik, Scorpio, Dhanu, Sagittarius, Makar, Capricorn, Kumbh, Aquarius, and Meen is Pisces, finally. So you have got the 12 Rashis in a very chronological series. Now guys, what happened? There is another thing you have to note down. I am going to tell you now the name of 4 brothers also. Then I'll go ahead with the next slide. Right? Yes. So just note down name of the first brother. Note down Sucham. 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 Name of first brother is Sucham. Sucham. Note it down. Right? Further, if I'll go ahead, name of the second brother I am telling you, Ragu, Ragu, Sucham, Ragu. Okay, then I'll go to third brother. His name is Shabu, Shabu, Shabu. Simple, ठीक है.
And finally, the name of fourth brother is Keshu. Keshu. Keshav से बना Keshu. Okay? Keshu. तो simple है. या जिसको ये समझ लेगी जिसके केश लंबे उसको बोल देते हैं केशु. Right? So this is how you have to understand. Now 4 brothers आपको दे दिए गए. इनको भी डिकोड कर देता हूँ. डाउन द लाइन साथ साथ लिख लीजिए. सूर्य इज इक्वल टू सन. सू से बना सूर्य. सूचम है ना. सूचम. च से बना चंद्रमा. और म से बना मंगल. सूचम. पहला ब्रदर का आपको डिकोड हो गया. क्लियर है. अभी ये सब मैं दिखाऊंगा आपको स्लाइड पर. पहले आप लिखिए. राइट. फर्दर अगर मैं लेता हूँ राघु को तो RAAGU मैंने बोला था. रा से बना राहु. जी से बना गुरु. GU से बना गुरु. ओके. And further if I'll go ahead with the things, Shabut, SHABU, तो श से बना शनि और बु से बना बुध. ठीक है. And further last but not the least, Keshu, KESHU, K से बना केतु and शु से बना शुक्र. Simple. Keshu. Now we have decoded the 4 brothers also. अब क्या हुआ. इन 4 brothers से हमारे को मिल गए. We got 9 planets. Okay. Sucham, Ragu, Shabbu, Keshu. Okay, but as I told you, there is a relationship between Rashis and these planets because brothers and sisters है. But ये तो नहीं है कि सारे brothers sisters एक दूसरे को like करेंगे. Okay, it is not the same kind of. Sometimes it happens that you love your one of the sister, you know, in comparison to other is like your affection, you are more attached to her. So that kind of relationship is there. So as I told you, brothers and sisters. Look, okay, we got 3 sisters, 4 brothers now. But now we are going to talk about their relationships and how we are going to remember those relationships. Now there is again a simple formula. Right, guys? We are going to understand that. So is that easy or not? I think it's quite easy for you. Only simple 4, brothers, 3 sisters. Always you will remember now. Chronology will not be forgotten by you. Now I am going ahead with the relationship. I am going to tell you how they are related to each other, how much they like each other, whether they don't like each other, whether they don't want to see faces of each other. Relationship could go in any way, na? So we have to understand that now. So guys, just a moment. Another screen is opening in front of you, right? Okay. Now you have to understand one thing. You can see my screen. Okay. In front of these Rashis, in front of Aries, I wrote 18. In front of Taurus, I wrote 27. In front of Gemini, I wrote 36. Now, what does mean? I told you about the 9 brothers. Na? I told you about the 9 brothers. So that means Aries, who is the Lord of Aries? I'm going to tell you that. So Lord of the Aries is Mars. So you can write in front of Mars, you can always write 18. If I ask you the code of the Mars, you have to write 18. Why I am telling this? You can see here. Rashi number 1 and Rashi number 8. Just guys see my cursor first, understand the concept. Rashi number 1 and Rashi number 8 is governed by Mars. So what is the code of Mars? Always write 18. Simple. So now you will not forget the, simply tell that, just remember the table of 27. Na? Oh, sorry, 9. 9 to the 18, 9 3 27, 9 4 the 36. Simple. This is how we have to remember. Now when I come here, you can see here my screen, Aries and Scorpio. Both are having 18 number. That means what is the code of Mars? They belong to Mars. Okay. And the code of Mars is 18. It is very simple. Okay. Now I'll go to Rashi number 2. Taurus and Rashi number 7. See here. See my cursor. 27. Now who is the Lord of 2 and 7? 2, 7 belongs to Venus. In front of Venus, write down 27 number. Simple. Then now you can see the screen. It is quite obvious. Now I have explained the relationship. Now in front of Mercury, you write 36. You can see Rashi number 3 and Rashi number 6 on your screen. Just see Rashi number 3 and Rashi number 6, 36. So write down Mercury. It is quite simple. Now guys, you have to remember one thing. When we talk about, these 9 planets, there is another concern which comes, during the time of this Amrit Manthan.
ओके, जब अमृत मंथन चल रहा था तो उस समय क्या हुआ था, राहु जो था, राहु मायावी प्लेनेट है, राहु इज अ दैत्य, राहु इज अ राक्षस बेसिकली, ओके, राहु इज असुर, ओके. So we have to understand Rahu came in between when Amrit Manthan was going on, and during that particular point, what happened? Chandrama has given a complaint against Rahu to Vishnuji, and Vishnuji was distributing the Amrit to all the devas. He was distributing equally. But what happened? Rahu just took the almost he changed his entire look, and he stand among devas. Now what happened? Moon has observed the scene, and Moon has given the complaint. So what happened? Ultimately, Rahu took the Amrit. Okay, he was, he took somehow, but Vishnuji has cut his throat. But after that, how I'm just sharing this story. Reason being, there is a planet called Rahu and Ketu. But Rahu and Ketu does not have their own body. That means they do not own any of the Rashi. Okay, that is why I'm mentioning this story to you. Okay, and there are two planets, as I told you, in this planet, this is a family. Now when we talk about sun is a father basically. At the end of the day, when you will understand, sun is the father of this solar system, and moon is the mother. Moon is the mother of this solar system. So this is how you have to understand. And moon is a female planet, sun is the male planet. So these are the basic differences. We will learn about these things also. We will learn about their genders also. ठीक है. तो हम अब आगे बढ़ते हैं. तो व्हाट हैपन कि मम्मी पापा ने क्या किया, अपने पास एक एक राशि रख ली. मम्मी ने अपने पास रख ली कैंसर, पापा ने अपने पास रख ली सिंह. तो मून एंड सन आर हैविंग ओनली, दे एक्वायर ओनली वन राशि. ये थंब रूल है. दिस इज अ थंब रूल. Moon and Sun acquire only one Rashi, okay, and rest of the planets acquire two Rashis. That is the thumb rule, okay. So मम्मी पापा ने एक एक राशि अपने पास रख ली, बाकी बच्चों के बीच में बांट दी कि बाकी तुम रख लो, okay. So this is how this distribution occurred. Now you have to see here, Cancer is equal to number 4. So what I told, Chandrama, Moon, number 4, Moon is acquired by Moon, and number 5 is acquired by Sun. Simple. So what is the code of Sun? Always remember 5. What is the code of Moon? Always remember 4. Okay. So this is how you have to understand. Now you will be able to understand. You will be surprised. We have done, as such 8 Rashis has completed with us. You can just see my screen. 18, 18, 27, 27, 36, 36, 4, 5. So till Scorpio we have covered. Is it quite easy now? Now you have understand the relationship. So if I ask you now, what is Mars? Mars acquire which Rashi? You will simply say 18 number. If I'll ask you Mercury acquire which Rashi? You will say 36 number. If I ask you 4 number belongs to which planet? You will say Moon. Simple. So this is how you have to understand. Quite simple. So we have completed 8 Rashis. Guys, you have understood who are the lords of these 8 Rashis basically. Now actually planets are the lords of Rashis. Okay, they acquire the Rashi. Okay, that means they acquire that particular space. The way you acquire your home, na? The way you acquire your home in the same way. So we'll go ahead now. Now guys, only 4 Rashis are being left. Okay. Now just see, there is a code. In front of Jupiter, just write 912. Just write 912 in front of Guru. Guru means Jupiter. Guru bole to Jupiter. You have to write in front of Jupiter 912. 912. 912 is equal to Sagittarius number 9. 12 number mean. Yani Pisces. 912. 912. See my screen. 912. 912. Right? In front of Jupiter, just write down 912, and in front of Saturn, just write 1011. Simple. That means Saturn acquire Rashi number 10, Rashi number 11. Now, if I ask you what is the code of Saturn, you will immediately say 1011. Simple. 10, 11. Simple है. उसके बाद when I ask you code of like Mercury, you will say 36. Code of Libra, what is Libra? Libra is associated with 27. 27 means Venus. Simple. No need to even see anything. Simply these numbers will explain you everything. So guys, till this point,
Any doubts? You want to ask me anything else? I hope everything is clear. Clear. Yes, sir. बिल्कुल clear. Good. चलिए, तो ऐसे ही सिंपल वे में आगे बढ़ेंगे, बिकॉज इमेज जो होती है ना, इमेज ऐसी बनी हुई है एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी इज वेरी टफ. नो, लेट मी टेल यू, इट इज नॉट टफ. एंड आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट एट ऑल. मैंने अपने पापा से बहुत मार खाई है एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में. सो दीज आर द सिंपल फार्मूला. दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग, एंड दिस इज रियली अ काइंड ऑफ पेन आई एम शेयरिंग. आई मीन टू से, मुझे 22 साल की उम्र में उन्होंने बिठा दिया था इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल के साइंसेस के एग्जाम में. वहां पर मेरे साथ बैठे थे 50 साल 60 साल के लोग, जिनको लाइफ का भी एक्सपीरियंस था. So somehow I cleared my examination, but how I cleared it, this is what I am explaining you now. So these are the formulas. This is how I used to, make the short formulas, and I used to remember and do the things at that point, right? So is that interesting or not, guys? सही है ना? Simple है.